Summer 21, question paper 21, question number 3, पार्ट बी को पॉज करके अच्छी तरह से पहले आप पढ़ लें. So इस क्वेश्चन में we have to write the preview procedure that takes the name as text file as parameter. If the file is empty, it outputs a warning message. Otherwise, output the first 5 lines from the file. If file contains lesser number of lines than 5 lines, output all lines, either 1, 2, or 3 or 4, but no more than 5 lines. The first thing I would like to do in this is write my header of the program. Procedure, preview, and the parameter passed is by value file name as string. बाय वैल्यू और डेटा टाइप लिखने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम इस चीज़ की अगर एक आदत डालें तो अच्छा रहता है. ऑल्दो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जब एग्जामिनर आपको मेंशन करे that you have to write the parameter passing method and then you have to write the data type in this. But if we have we are in practice in this, तो हमारे लिए थोड़ा सा जो relevant question होंगे वो आसान रहेंगे ना फिर. So file name as string is passed as parameter and end procedure. I always code in this way, that I identify that how many, what is the header, footer, function, procedure, what are the variables required. So one variable that is required is file name, that is passed as parameter, तो हम लोग लिख लिया हुआ है. I need to count 5 lines, so I declare a variable count of a string type, of integer type, and this I would like to set as count as 0, क्योंकि ये 0 से काउंट नहीं होगी, और अगर कोई काउंट 0 रहा तो इसका मतलब फाइल में कोई लाइन नहीं है. एक वे ये भी है, इस तरह से भी हम वार्निंग मैसेज दे सकते हैं, या हम एंड ऑफ फंक्शन फाइल मेथड यूज करके भी हम कर सकते हैं. फाइल ओपन करें, उसको फिर हम उसमें चेक करेंगे फाइल एम्प्टी अगर हुई तो वो फिर आउटपुट हो जाएगा मैसेज के फाइल एम्प्टी. अदरवाइज फिर हम उसको लिख सकते हैं, यानी कि काउंटर मैसेज से भी कर सकते हैं, फाइल ओपन करने के बाद इफ देन एल्स से भी कर सकते हैं. सो जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट कोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए. I know that I have been given a file, so I need to open the file. Open file. File name is given as parameter, and I have to read the file. So right away I'll close the file somewhere over here or over here. I'll write close file and the file name this. Now I know I need to read the whole file. So in that case, the precondition loop will be used while end of file function file name is equals to false. यानी कि अगर फाइल एंड नहीं हुई है तो हमने इस लूप को रन करना है.
एक तो condition ही है. So right away I put my end while loop here so that I get the mark for this part at least, even if my whole procedure code is not correct. I'll be getting mark for this. The second condition is this, that I only need to output 5 files. So because I initialized my count variable with 0, so I'll put here count is less than 5. अगर मैं उसे 1 से करूँगा तो वो greater than less than equals to 5 लिखते हैं हम. So this is logical part. Now I'll read a line and output. So it's good to read a file into first line into a variable and then output. Although we can do it directly. So I declare variable. You can give this line or only line, whatever name you feel suitable. You can give that name. So here I'll read one line. So for that we say pseudocode file read or read file. So this means that one line be read from the variable that is containing the file name, and after comma we'll give the variable name in which the data will be stored, that is read from the file. One line that is read from the file will be stored in this variable line. As I said, you can give it name this line if you feel a better name, and we'll increment the count because one line has been read. We can output this line now, and I say output line. So you see, I this is the code part. This is the core part. I concentrate on this part at the end. First, I try to figure out what are the basic components that are required for my pseudocode that we learned from algorithms chapter, तो ताकि हम उसको यहाँ पे कर लें and we get maximum mark in this way. And the last, I will say, if file is empty, so it means the counter will be 0. So for that, I'll be writing over here if count is equals to 0, then and if inside here output uh, file is empty. This is what the whole code was about. So 5 marks. Understand it and rewrite yourself the way I did it. Don't copy paste it. So you can figure out some other method also. Like if you open a file and you can write over here, if end of file function gives you false, you output this message. And then in the else case, you can write this code, the while code. Getting? Understanding? Okay. Now the next question is that we have to do uh, this one. You can pause the video and read this question and read it from the beginning. It says there is an array that's name is log array that contains student information, student ID, host ID, and time and date, all as string, which is concatenated and stored in uh, array, each element containing this. So in the part it asks you that how this part 6 characters on the left and then the variable length host ID is separated from the time. So we can have a dash character, we can have a hash character, or any character suitable which will not be part of the data, student ID and LID and date. We can't use colon as a separator. Why? Because the colon will be part of the data. So we can't use colon and comma as a separator. Neither we can't use space as a separator. So the first part is about this. Go through the question and if you want to attempt it, attempt it. But today our target was to attempt a file ending question. So I came over here on part C and pause it, read the question, and then try to attempt it. Then see how I'm designing the solution.
फंक्शन लॉग इवेंट्स, सो हमें सबसे पहले पता चलेगा ये फंक्शन है, तो इसका हम हेडर लिखेंगे विच इज गिवन आईडी एज पैरामीटर। सो असल में इसको पढ़ने के बाद इंसान को ये करना चाहिए कि एक स्टूडेंट को, एक प्रोग्रामर को, कि मुझे इसमें क्या वेरिएबल्स चाहिए, मेरी क्या क्या इसमें इनिशियलाइजेशन होगी इन वेरिएबल्स की, और मुझे इस अरे के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कितने कोई लूप चाहिए होगा, कौन सा होगा, काउंट कंट्रोल, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, सिलेक्शन स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी, बिल्ट इन फंक्शंस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, फाइल को रीड करना है, राइट करना है या प्रिंट करना है, तो वो हमें सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना चाहिए ऑन द सम रफ एरिया। नाउ इफ यू रीड क्वेश्चन इट सेज सबसे पहले के फंक्शन, so I write over here function name is log events, which is given a parameter id. So by value id as string returns integer. Fourth bullet point पे लिखा हुआ है count the number of lines added to the file, return this count. So it is going to return integer. So what's the question? Question is that IDs पास हो रही है और ये ID array में से एक एलिमेंट को चेक कर रही है कि लेफ्ट साइड पे जो स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, अगर वो दोनों आईडी सेम है तो ये जो एलिमेंट का डेटा होगा लॉग अरे का, ये हम फाइल में लिखवा देंगे। और एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, so it is already existing file, we have to add at the end of the file, and the element of the array that is to be written on the file is to be erased, यानी कि उसको empty string बनाना है। सो मुझे जो सबसे पहली चीज़ समझ आई वो ये कि हमें काउंट करने हैं कि स्टूडेंट की आईडी फाइल में कितनी दफ़ा लिखवाई है लॉग अरे इवेंट के अंदर सर्च करने के बाद। So the first thing I do is declare account variable and initialize it as integer. I understand that this will be set as a 0 in the beginning, and at the end I return it because it says find out how many lines written on the file. I return it. So at the end I write end function because header का mark आपको तब मिलेगा जब आप end function लिखेंगे, और एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ return count, तो क्योंकि काउंट रिटर्न तो होना ही होना है ना कि हमने कितनी लाइन फाइल के ऊपर रखी है। एंड द फाइल नेम इज लॉग फाइल। सो फाइल्स हम जो पढ़ रहे हैं आपको पता है कि हम टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ ताकि मैं बार बार log file डॉट txt एज स्ट्रिंग ना लिखता रहूँ, तो इसलिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ फाइल नेम of string type, and I somewhere over here assign this file name, uh, the file being given to us, and file name is log file dot txt, and you know that files are string type. You may ask why we are writing it in double quotes, because the file name is contains some alphabets and a dot, so that is why I've stored it as a string format file. Now we have to read the log array जो हमें ऊपर क्वेश्चन में यहाँ बताई हुई है। The file name is log array which contain 2000 elements, so I have to go one by one on each element. So it का मतलब हुआ कि I need a variable index, so let's declare a variable index, and we understand we'll start the index from 0 or 1 as you feel easy, so I declared it as 1.
Now I know that I have to write on the file. So for that, I need to open the file first. We can't write on a file if file is not open. So I say open file. File name is given. I've stored in the variable file name. And because the file already exists and we have to add the data at the end, so I open in repend mode and I close this anywhere I like. I can close it. I say close file, and file name is stored in the variable file name. I have to read each element because ऊपर लिखा हुआ question में कि read each element from the array. So for that I use while index is less than equals to 1000. You can see over here it is sorry 2000. So I say in less than equals to 2000. Whenever we write loop will get closed somewhere. So for that I write end while. Inside that loop I have to pick one element, first elements left 6 character. If you carefully read from the from the question ever, it mentions left 6 digits are id. So मैंने उस लेफ्ट 6 कैरेक्टर्स को उठाना है और जो आईडी पैरामीटर पास हुआ है उससे मैच करना है. सो आई से हम इसको वेरिएबल में भी एक्सपेक्ट करके कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. आई से इफ लेफ्ट 6 कैरेक्टर्स किसके जो हमारी लॉग अरे है उसके जो 6 कैरेक्टर्स हैं इंडेक्स पोजीशन वाले के. इंडेक्स में इस वक्त 1 है तो इसका मतलब है कि वो जो हमारी इस वक्त लॉग अरे की फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन है क्योंकि इंडेक्स हमने 1 से स्टोर किया हुआ है उसके लॉग इंडेक्स अरे की इंडेक्स लोकेशन के लेफ्ट से 6 सेक्टर उठाना है. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग, लॉग अरे की इंडेक्स लोकेशन जिसमें कि इंडेक्स में इस वक्त 1 है यानी कि 1 लोकेशन के लेफ्ट साइड से 6 सेक्टर्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे आईडी से. अगर ये सेम हुए तो वी नीड टू राइट इट ऑन द फाइल. राइट अवे समवेयर बीनीथ 2-4 लाइनें छोड़ के आप लिख दो एंड इफ ताकि एंड इफ आपको मार्क मिल जाए इफ और एंड इफ का. एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी हैव टू राइट दैट एलिमेंट्स अगर वो मैच हो रहा है स्टूडेंट आईडी. एक्चुअली फाइल का क्वेश्चन का पर्पस ये है कि एक स्टूडेंट जिसकी आईडी पास हो रही है अरे में उसका नाम कितनी दफ़ा है लॉगिन का उसको फाइल में लिखवाना है और वो काउंट भी करना है हमने. सो हमने क्या करना है राइट फाइल कौन सी जो हमें फाइल नेम में हमने लिखा हुआ है और क्या लिखवाना है यही जो हमारी लॉग अरे की इंडेक्स लोकेशन है. लॉग अरे की इंडेक्स लोकेशन सॉरी की इंडेक्स लोकेशन इंडेक्स में इस वक्त 1 है ना तो लॉग अरे की 1 लोकेशन पे जो स्टूडेंट आईडी और उसका लॉगिन टाइम वगैरह है और जो आईडी है उसकी लैब आईडी वो सारा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो आई एम सेइंग राइट फाइल नेम में से पर लॉग अरे और ये क्योंकि अपेंड मोड में खुला है तो फाइल के एंड पर ये लिखा जाएगा. और फिर ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक और पॉइंट और वो क्या लिखा हुआ है कि उस लाइन को एम्प्टी कर दो. सो आई से लॉग अरे की इंडेक्स लोकेशन को क्या कर दो एम्प्टी. सो जस्ट पुट डबल कोट्स एंड count is equals to count plus 1. सो हमने एक लोकेशन को के लेफ्ट से 6 सेक्टर उठाए पास पैरामीटर आईडी से मैच किया. अगर सेम है तो उस स्टूडेंट की लॉगिन डिटेल को हमने फाइल पे अपेंड करवा दिया और फिर हमने नेक्स्ट इंडेक्स लोकेशन पे जाएंगे. इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1. हमारा कोड कंप्लीट. अब देखें इस तरह कोड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोडिंग सीख रहे होते हो सूडो कोड लिख रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा
आसान हो रहा होता है कि भई हमने जो इतने भी एल्गोरिदम्स के बेसिक हमने चीज़ें सीखी हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्ट्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो क्या-क्या आने हैं। हाँ, तो हमने हेडर लिखा, हमने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की, हमने इनिशियलाइज़ेशन की, फ़ाइल का नाम हमने सेव किया एक वेरिएबल में। फ़ाइल को ओपन क्लोज़ कर दिया। हमें पता था हमें सारी अरे 2000 एलिमेंट तक ईच एलिमेंट को हमने जाके चेक करना है। उसपे लिखा हुआ है क्वेश्चन ईच एलिमेंट। तो हमने एक लूप लगा लिया, लूप क्लोज़ कर दिया, फ़ाइल ओपन कर दी, क्लोज़ कर दी। फिर हमने लेफ्ट से 6 सेक्टर उठाए, उनको मैच किया, मैच करने के लिए इफ कंडीशन लगाई। अगर दोनों सेम हैं तो हमने फ़ाइल पे अपेंड कर दिया उसको और अगर दोनों सेम नहीं हैं तो फिर हमने उसको मिस कर दिया, हमने उसको स्टोर नहीं करवाया। सो जो एलिमेंट हमने अरे का फाइल पे लिखवाया उसको अरे में से इरेज़ कर दिया, उसको एम्प्टी कर दिया, काउंटिंग भी कर ली, इंडेक्स इंक्रीमेंट इसलिए कर ली ताकि लूप दूसरे एलिमेंट से जाके डेटा को मतलब पिक करके तो लेफ्ट से 6 सेक्टर उठा के साथ चेक करता जाए। तो लूप सारे अरे के 12,000 के 2000 एलिमेंट्स को बारी-बारी उठाएगा, उसके लेफ्ट से 6 सेक्टर्स उठाएगा, उसको पास स्टूडेंट आईडी से मैच करेगा, सेम हुए तो फाइल में लिखवाएगा, एम्प्टी करेगा, काउंटिंग करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। जब सारी जगह रीड हो जाएगी तो फाइल को क्लोज़ कर देंगे और जितना भी काउंटिंग हुई, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज़ हमारी फाइल एम्प्टी ही हुई हमारी अरे ही हम 2001 से इनिशियलाइज़ कर देते तो फिर काउंट 0 रिटर्न होता। जस्ट टेलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। सो इस क्वेश्चन को भी दोबारा से आप पढ़ें और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें बाद में फिर इसको मेरे कोड को भी देख सकते हैं। गोइंग ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।